हेलो एवरीवन। चलो आज हम एक टॉपिक के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को वेलकम करूंगा मेरे इस मैथ के सेक्शन में, इस मैथ इट वीडियोज़ में। सी विल सी हाउ टू कैलकुलेट एनी 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number, multiplication. All these things we will see in this topic. First of all, I am going to tell you small story. There is two friends. One friend name I will tell you. One is third, another is fourth. This is the two names of that friend. One friend have 2 coins. One friend have 2 coins. Another friend have 1 apple basket. See, अभी यह क्या हुआ, इस फ्रेंड के पास 2 कॉइन है, इसके पास एप्पल का एक बास्केट है। देन थर्ड जो फ्रेंड है वो उसको कहता है मुझे एप्पल खरीदने हैं, तो वो बोलता है ओके ठीक है, यू कैन परचेस एप्पल फ्रॉम मी। बट ये पूछता है हाउ मेनी प्राइस ऑफ दैट एप्पल। ये बोलता है वन एप्पल इक्वल टू हाउ मेनी कॉइन्स, 2 कॉइन्स। हाउ मेनी कॉइन्स, 2 कॉइन्स। देन ये कहता है, ये थर्ड वाला जो फ्रेंड है वो बोलता है अरे यार चलो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे एप्पल खरीदेंगे जो हमारे लिए 2-3 दिन लगेंगे, जो हम 2-3 दिन खा सकते हैं। तो वो बोलता है, ये थर्ड वाला फ्रेंड बोलता है फोर्थ को, मुझे 25 एप्पल दे दो, यानी कि आई वॉन्ट 25 एप्पल, कैन यू गिव मी। दिस फोर्थ फ्रेंड बोलता है यस आई कैन गिव यू। देन दिस विल आस्क टू हिम how many rupees I want to give, means how many coins I want to give you. Then they will calculate something. Then how to calculate, how to tell to him you give me this much coin and this many coins. Then what to do, we will calculate these two, that is the C. 2 5s are 10, 10s 0 carry 1. Then 2 2s are 4 plus carry 1. How much? How many coins? If he want buy 25 apple, then he want to give how much coin? 25 coins. Like this we can calculate our multiplication with the help of numbers 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit. Okay, now we'll see one by one. Another example I am going to take here and I am explaining about this. First of all, everyone known about this 2 digit number. जैसे आपको ये मालूम है सभी को, वह ये तो मालूम है सभी को, 2 डिजिट बोले तो कितने होते हैं, जिसमें 10 से 1 होता है और 1 से होता है, तो इसे कहते हैं 2 डिजिट। तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताऊंगा। सपोज दिस इज 37 into 3. What will be the answer? How to calculate? See, 3 7s are how much? 21. What will the answer? 1 is here, carry 2. 3 3s are 9 plus 2, how much? 11. This is the answer of this 2 digit multiplication. This is the 10, this is the 1. Means place value. You know everyone, last year you have seen about the place value. Ones, tens, thousands, 100, 1000, lakh, like this. I hope everyone understood. Again I am explaining another example. Take big number, suppose
77 into 8. What will be the answer? This is the 1, 10, this is the 1. What will be the answer? 8 7 how much? 56. Then what is the 6 6 carry 5. Carry 5. Then 8 7 56 plus 5. How many? This is the answer. Can you identify? Yes. Same. Suppose another example I am going to tell you here. 6 into 9. Can we explain? Anyone can tell? Just I am going to see. 9 6 how much? 54. Carry 5. 9 9 81 plus 5. How much? Like this. This is the answer of this multiplication. This is a 2 digit into 1 digit. Yes. Like this we can calculate the multiplication of any 2 digit number. Now we will see another example about 3 digit number. First of all we have to solve this, then we will see 3 digit number. How much? 3 means, you know everyone, 3 means what? Ones, 10 and 100. This is the 3 digit number. Suppose I am going to explain with the help of example. See, 2, 3 and 1. See, and here is the 5. अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको. ऊपर कितने हैं? 3 डिजिट. नीचे कितने हैं? 5, यानी कि 1. 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट. इसका मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है. तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? सी, 5 2 10, 0 कैरी 1. 5 3 15 plus 1 16 carry 1. 5 1 5 plus 1. This is the answer of this 3 digit multiplication. Okay, another example. 3 5 7, this is the 100, this is the tens, this is the ones, into 3 into 3. आप देखो यहाँ पे इनमें से कैसे निकलना है. 3 7 21, 1 carry 2, 3 5 15 plus 2 17, 17 carry 1. 3 3 9 plus 1. How much? This is the answer of this 3 digit number. Again